से हट आ गई हूँ, वहां से समरसेट में हूँ। हाँ जी। अच्छा। So you are not in Oldham now, right? No. अच्छा। चलो, खुदावंद आपके साथ हो, and let's welcome the lady of the Lord. अपने हाथों को मिलाएं और तो हम वेलकम करते हैं। Thank you. बड़ा जलाल इनके लिए मांगते हैं। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे भाई। Thank you very much. खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। In the name of the Lord Jesus Christ, I welcome you as a church, because we are church, we are body of Christ, and we are the bride of Christ, and we are here to learn. मेरा ख्याल है कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए मैसेज दूंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने जो आज कलाम मुझे आपके लिए दिया है, वो पाक रूह के फलों में से एक फल है, जिसके बगैर हम खुदावंद के पाक रूह के फलों को अपनी जिंदगी में कायम नहीं रख सकते, और वो है इंटेग्रिटी, ईमानदारी। और ईमानदारी ये इतनी जरूरी चीज है हमारे लिए, ये इतना जरूरी और अहम हिस्सा है हमारे किरदार का, that ये ऐसी क्वालिटी पैदा करता है, ये ऐसी क्वालिटी है, ये ऐसा फल है जिसके बगैर हमारी जिंदगी में किसी किस्म का भी कोई भी फल या बरकत नहीं रहती। Integrity has a value, and the value of integrity is very, very important as a believer or as a person. Believer in Jesus Christ or non-believer in Jesus Christ. Integrity in your life is just like the breath of God in you. And when the breath of God in you is not in the neat and clean and pure place, that can be polluted in your life, and it can make pollution in your life. I can see that today there will be changes in your lives. There will be a lot of things that you want to get rid of, because integrity challenges you. Integrity has authority and power that brings down and demolishes all the deception and all the things that are not of God and that are not appointed and made part in your life and in your character. The most important quality that you can ever develop in your life is ईमानदारी, दयानतदारी। मैं कुछ आयात पढ़ना चाहती हूँ कलामे मुकद्दस में से, और उसमें पैदाइश की किताब और उसका 39 चैप्टर है, और उस 39 चैप्टर में से यूसुफ की जिंदगी के कुछ हिस्से को मैं पढ़ना चाहूंगी इन उर्दू। और यूसुफ को मिस्र लाए, और 44 मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलूदार था, दारों का सरदार था, और उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। और खुदावन ने यूसुफ के साथ था, और वो इकमाल बंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था, और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद
میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی، اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ آگے چل کے کہانی کا آپ کو پتا ہے، 44 کی بیوی اس پہ الزام لگاتی ہے، تو اس الزام کے نتیجہ میں اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ 3 اور ورسز پڑھوں گی آپ کے لیے۔ لیکن خود اس کو جیل میں جب ڈال دیا گیا وہ وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا، اور قید خانہ کے دروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے، اور قید خانہ کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا تھا خداوند اس میں اسے اکمال مند بخشتا تھا، اقبال مندی بخشتا تھا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، ہمارے بزرگ جو خدا کا کلام ہمارے لیے لے کے آئے، خدا کا میسج ہمارے لیے لے کے آئے، وہ خداوند میں کتنے مضبوط تھے، اور جب خدا ان کے ساتھ تھا تو ان کو اقبال مندی ملتی تھی۔ ہر ایک کی نظر میں خدا انہیں اچھا بناتا تھا، اونچا رکھتا تھا، سربلندی بخشتا تھا، سرفرازی دیتا تھا، اس لیے کہ وہ دل کے صاف اور دل کے اندر جو ان کے خدا کا خوف تھا، وہ خوف ان کو ایمانداری اور دیانتداری اور انٹیگریٹی اور کسی چیز سے کمپرومائز نہ کرنے کی طاقت دیتا تھا۔ Opposite of integrity is compromising، جس کا مطلب اردو میں سمجھوتا ہے۔ The meaning of integrity is کاملیت، مکمل طور پہ کسی چیز کے اندر ڈھل جانا۔ ہیبرو کی جب ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس لفظ کے لیے تو میرے پاس جو لفظ ہے وہ ہے wholeness، completeness، moral innocence، یعنی اخلاقی معصومیت، اخلاقی معصومیت اور کاملیت۔ کاملیت means perfection۔ ہمارے اندر اخلاقی معصومیت ہوگی تو ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان میں قائم رہیں گے، اور اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، ہم میں کئی بہن بھائی ایسے ہوں گے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمارے ہر خاندان میں، ہر بلیف میں، ہر فیتھ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ خداوند نے کیوں میرے دل میں یہ پیغام دیا that you have to value the integrity. Why? Because what psalmist says کہ میرے زبور 25 میں لکھا ہے، میری جان کی حفاظت کر
اور مجھے چھڑا. مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے. دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھے کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے. دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں. آپ کو سلامتی خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سلامتی اسی میں ہے جب ہم خدا کے ساتھ جڑے ہیں اور دیانتداری سے جڑے ہیں اور ایمانداری سے جڑے ہیں. دیکھیے جب ہم کسی کو جاب دیتے ہیں یا ہم کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا CRB کروایا جاتا ہے. ہمارے لیے ریفرنس مانگے جاتے ہیں. ہماری جاب کے اندر جو پرسنل اسپیکس لکھے جاتے ہیں اس میں ٹرسٹ وردی اینڈ فیتھفلنس کا لفظ بھی آتا ہے. اور جاب جب مل جاتی ہے تو پھر پروبیشنری پیریڈ رکھا جاتا ہے, 6 مہینے کا وقفہ یا پھر اس سے زیادہ یا پھر اس سے کم. جب پروبیشنری پیریڈ دیا جاتا ہے جاب میں تو آپ پہ نظر رکھی جاتی ہے, آپ کی ریگولیرٹی پہ اور آپ کی پنکچویلٹی پہ, کہ آپ کام کو دیانتداری سے کر رہے ہیں. اور جب آپ کام پہ ہیں, آپ اپنی جاب پہ ہیں, تو وہ یقیناً سپرویژن کرتے ہیں آپ کی, اور سپروائزر آپ کے اوپر اپنے خاص بندوں کو نظر رکھنے کے لیے آپ کے ارد گرد اپنی ٹیم کو رکھ دیتا ہے. یہ تو ہے کہ دنیاوی طور پہ جب ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو ہماری ایمانداری کو, ہماری دیانتداری کو, ہماری ٹرسٹ وردینس کو, ہماری ہر اس چیز کو چیک کیا جاتا ہے کہ ہمارے کردار میں مورالٹیز قائم ہیں کہ نہیں. یہ ہماری دنیاوی اس میں اگر ہم لوگ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو, اور ہمارے لیے جب ہمیں جاب ملتی ہے تو ہمارے لیے یہ چیک کیا جاتا ہے. تو my friends, today the law of integrity and the value of integrity and the importance of integrity, they work together hand to hand. The law of the integrity is that you be pure and holy towards God, towards yourself, towards others. If we read Latin, in meaning of integrity is the same. The word innocence has been used, which is very important. اگر ہماری روح میں معصومیت نہیں ہے, کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا that you are a believer, you are a Christian, then you answer me, does your soul has a backbone? That's a very genuine question. اگر ہم روح کی بات کرتے ہیں, جان کی بات کرتے ہیں کہ خدا میں کی روح ہمارے اندر ہے, تو کیا اس کی بیک بون ہمارے اندر ہے؟ How can we live on the spirit? خدا میں یسوع مسیح نے جو ہمیں سکھایا ہے, ہم نے جو کہانی یوسف کی پڑھی ہے اس میں خداوند کی جھلک نظر آتی ہے. خدا میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ بچہ اپنے ماں باپ کو ملا 3 دن کے بعد اس جگہ پہ جہاں پہ ٹیمپل تھا, اور ٹیمپل میں جا کے وہ اپنے فریسیوں اور صدیسیوں کو ٹیچنگ دے رہا تھا, تو لکھا ہے اس کے بعد کہ وہ خدا کی حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی مقبولیت میں اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا گیا. خداوند کا مقبول ہمارا ٹھہرنا لوگوں کی نظر میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹیگریٹی کو خدا میں بھی قائم رکھیں اور خود میں بھی قائم رکھیں. ہمارے اندر جب تک
मुझे खुदावन ने सिखाया है कि हम खुद अपने सर्कमस्टेंसेस के जिम्मेदार हैं, हम अपने हालात खुद तरतीब देते हैं। अगर जिस बात की हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसकी कंट्रोल हमारे हाथ में है, जिसकी अथॉरिटी यानी इख्तियार हमारे हाथ में है, अगर हम उसको हाथ से जाने दें और अपनी पुरानी आदत को इसमें शामिल कर दें और गुस्से को खुला छोड़ दें, तो वो हालात हम खुद पैदा करते हैं, नेगेटिविटी के, गुस्सा के, बीमारी के। बीमारी से आज अपनी जात पा सकते हैं एक लम्हे में, अगर आप अपना ध्यान थोड़ा सा दें कि बच्चों को जब हम सिखाते हैं कि हमें शरारत नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे दूसरे का दिल दुखे, तो फिर माय फ्रेंड्स, हमें ये अपने घर में इस लॉ को रखना, इस इंटेग्रिटी की लॉ को रखना है कि हम खुद भी उस पर अमल करें। The development of character is one of the most important thing you can do. Working on your character means discipling yourself to do more and more those things that are totally and completely are honest and that honest person can do under all the circumstances. कलाम में लिखा है, ज़बूर की किताब में, ज़बूर की किताब में लिखा है कि मैं, ऐ खुदा, उस सदाकत और रास्ते के मुताबिक जो मुझ में है मेरी अदालत कर। जो इंटेग्रिटी मेरे अंदर मौजूद है उसके मुताबिक मेरी अदालत कर। जो रास्ती मुझ में है, जो सदाकत मुझ में है, वैल्यू करना है उस इंटेग्रिटी, वो रास्ती और वो जो दयानतदारी है, उसके लिए कि दयानतदारी में हम अपने आप को पहले इस तरीके से अपने आप को तरतीब दें कि जब हम बाहर निकलें तो लोग हमारी मिसाल दें। ये हम सब जानते हैं। मैं इसलिए भी कह रही हूँ माय फ्रेंड्स दैट दिस इज इम्पोर्टेंट कि जब मैं दूसरे मजहब से आई हूँ तो मैं वो सारी बातें करती थी जिससे लोग ये समझते थे कि झूठ में ज्यादा खुशी मिलती है, झूठ से हमारी जिंदगी संवर सकती है, धोखा देने से हमारी जिंदगी संवर सकती है। But that is not the case in believing in Jesus Christ. पाक रूह हमें सिखाते हैं फलों के बारे में। पाक रूह के फल हमारी जिंदगी में इस तरीके से कायम होने चाहिए क्योंकि उस पाक रूह के फलों की कोई भी शरीयत मुखालिफत नहीं करती। आज आपकी जिंदगी में अगर कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, आपके पास जॉब नहीं, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो खुदावंद हमें सिखाता है कि वो दयानतदारी को याद करें, जो दयानतदारी का बीज मैंने आपके अंदर बोया है। खुदावंद यीशु मसीह के पास आप जब आए तो आपको वो बीज मैंने दिया। पाक रूह के फल आपके अंदर मौजूद है और ये पाक रूह के फल एक दूसरे में इंटीग्रेट है, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इनमें अगर 4 पे आप अमल करेंगे और 3 पर नहीं, और 3 पर अमल करेंगे और 2 पे नहीं, तो ये पाक रूह के फल आपकी जिंदगी में वो स्टेबिलिटी और वो सारी बात जो खुदा ने आपके लिए रख छोड़ी है वो पूरी नहीं हो सकती। जो वादे खुदा ने जनरेशन टू जनरेशन आपको बरकत देने के लिए, आपके खानदान को, आपके छोटे बच्चों को बरकत देने के लिए किए हैं, वो जब तक आपके अंदर पूरे तौर पर द होलनेस, इंटेग्रिटी मीन्स
wholeness and completeness and totality of your character in that. Totality of your character. The value of integrity removes every negative, every confusion situation from your life. अब ये देखिए कि जब हम कभी ये कहते हैं सफेद झूठ बोला, सफेद झूठ बोलने का मतलब क्या है? झूठ झूठ है। सफेद झूठ या काला झूठ या जिस भी कलर का झूठ है, छोटा झूठ है या बड़ा झूठ है, that is not the point. The point is कि नेगेटिविटी और झूठ को अपनी जिंदगी से कंप्लीट तौर पे निकालना है, क्योंकि जो जिंदगी खुदा ने हमें दी है मेरे बहनों भाइयों मेरे बच्चों, उसको दयानतदारी से हमें स्टुअर्ड बनाया गया है। हमें हमारी आपकी जिंदगी में आज जो भी कुछ खुदा की तरफ से जो नहीं है उसको आज निकल जाना चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपके लिए ये आज का जो लम्हा है ये दोबारा वापस नहीं आएगा। ये आज की जो इबादत है ये कल दोबारा नहीं होगी, और तरह की होगी, नया मसा होगा, नई तालीम होगी, उसी कलाम में से जिस कलाम में से हम रोज पढ़ते हैं उसमें से नई तालीम होगी, नए गीत गाए जाएंगे। लेकिन आपके हाथ से वो लम्हा दोबारा ये ऐसा नहीं आएगा जिसमें आप अपनी उन सारी बातों से इनकारी करें जो खुदा की तरफ से नहीं है। उसके लिए आप हर रोज करें इनकारी। Why? Because integrity has importance. It's important. Integrity is one of the most important assets we have, and we work towards it. We work hard towards to protect ourselves and preserve. ये इंटेग्रिटी, ये दयानतदारी जब हम अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं पूरे तौर पे, जिसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, जिसमें किसी किस्म का कोई धोखाधड़ी नहीं होती, मेरे बहनों और भाइयों, वो हमारी हिफाजत करती है। वो आपकी इबादत गाहों की हिफाजत करती है, वो आपके बच्चों की हिफाजत करती है, वो आपके बिजनेस की हिफाजत करती है, वो आपके पैसे की भी हिफाजत करती है। दयानतदारी और ईमानदारी हाथ से मत जाने दें, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर वो ऐसी चीजें जो खुदा की तरफ से नहीं हैं उनकी कोई जगह ना रहे। दयानतदारी और ईमानदारी पाक रूह का फल है। पाक रूह का फल हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो खुदा के दिए हुए पाक रूह के गिफ्ट्स जो हैं, जो नेमतें हैं, उनमें हम कामयाब नहीं होंगे। उनमें हमारी जितनी भी मेहनत है, दुआएं हैं, हमारी तपस्या है, वो उसमें पूरी फिर भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर दयानतदारी नहीं है। अगर हम खुद को फेमस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऐसा बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी खानदान को बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी किसी भी ऐसी चीज को लोगों की नजरों में ऊंचा करना चाहते हैं, इकबालमंदी देना चाहते हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों, खुद को हमें नीचा करना पड़ेगा। जोसेफ की कहानी हमने अभी देखी है। जोसेफ के भाइयों ने उसके साथ क्या किया? उसको सहारा किसका था? सिर्फ अपने बाप का, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। और उसने क्या, उसके साथ जितनी भी उसके भाइयों ने ज्यादतियां की, उसके नतीजे में वो दयानतदार रहा, ईमानदार रहा। उसके अंदर से भाइयों की मोहब्बत, इज्जत और एहतराम खत्म नहीं हुआ। उसने उनका एहतराम और अदब रखा, कायम रखा उसे, क्योंकि आखिर में जब हम देखते हैं तो वही खुदा ने जो उसे दिखाया था, बताया था, वही उनके लिए रोजी पानी और रहने सहने का इंतजाम करता है। अब इकबालमंदी अगर हमारी मुश्किल आ जाए तो हमें इकबालमंदी उसी वक्त मिलती है जब हम खुदा का पल्ला हाथ से ना छोड़ें, यीशु के क्रॉस को अपने सीने से लगाए रखें, क्योंकि खुदा का जो दिया हुआ ये निजात का तोहफा है, ये उसी वक्त पूरा होगा जब हमारे अंदर पाक रूह के फल पूरे तौर पर, पूरे 9 के 9 फल काम करेंगे,
ہماری زندگی میں سے وہ نچوڑیں گے سارا کچھ جو ہم اس خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور جب ایمانداری اور دیانتداری ہمارے اندر اپنی پوری اخلاقی معصومیت سے قائم رہے گی تو پھر ہمیں خدا استعمال بھی کرے گا اور خدا ہمیں وہ برکتیں دے گا جو ابراہیم سے اس نے وعدہ کیا. Generation to generation. And he will never let you go. آپ کے بزنس میں, آپ کے فائنانس میں برکت ملے گی. اگر آپ کے دل میں خدا نے ڈالا ہے کہ گلوری پریئر منسٹری میں آپ نے اور آپ کے اپنے اس چرچ میں, فل گاسپل چرچ میں آپ نے, آپ کے دل میں خدا نے جو بات ڈالی ہے کہ اتنی دائیکی یا اتنی آفرنگ جانی چاہیے اور آپ اس میں سے تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں, doesn't matter, I will pay it next time. I will pay it next time. Doesn't matter, I can pay now this much, but now next time I will pay more. Next time you don't know what will happen. My friends, یہودا اسکروتی نے جو بات کی تھی وہ خدا کو پسند نہیں تھی. یہودا اسکروتی نے کلام میں لکھا ہے کہ وہ پیسے نکال کے رکھ لیتا تھا. ابھی خداوند اس کے ساتھ ہے, ابھی خداوند یسوع مسیح نے اس کو برکت دی تھی کہ وہ جا کے باقی سارے 11 شاگردوں کے ساتھ جا کے وہ اپنے معجزے کرے جو طاقت خداوند یسوع مسیح نے اسے دی. معجزے کرے اور بیماروں کو چنگا کرے اور بدروؤں کو نکالے. لیکن اس کے دل کی وہ بے ایمانی نے اس کو وہاں پہ پہنچا دیا جہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات خدا کی طرف سے نہیں تھی کہ وہ چوری کرتا, وہ روپے پیسے میں سے چوری کرتا. اعمال کی کتاب ہننیا اور اس کے جیون ساتھی کے ساتھ کیسا ہوا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں, اور اگر نہیں جانتے تو اعمال کی کتاب کو پڑھیے. خدا سے اپنے ہاتھ کو مت روکے, ورنہ اگر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا تو جو دیانتداری اور ایمانداری سے آپ باقی کام کرتے ہیں اس کے ہاتھ روکنے سے مشکل میں پڑے تو پھر سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں رہے گا. That we are giving to God, we are attending the church, we are Christians, we are believers. This is a challenge, my friends. And when challenge comes, it hurts. And when we hurt, that's where the job starts. خدا کا پاک روح جب کنوکٹ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا تنبیہ کر رہا ہے. جب ہماری زندگی میں چیلنج آتا ہے, دیکھیے جو ٹہنیاں نکالی جاتی ہیں درخت سے, زندہ درخت سے جس کے اندر زندگی چل رہی ہے, جب وہ مردہ جھاڑیاں جس میں سے مردہ جو شاخیں ہیں ان کو الگ کیا جاتا ہے زندہ سے, زندہ ہرے بھرے درخت سے, تو درخت جو ہرا بھرا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, جو ڈالی مردہ ہوتی ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اس کو نکال کے آگ میں پھینکا جاتا ہے. سو جو چیزیں آج خدا کی طرف سے نہیں ہیں ان کو جانے دیجئے. And your healing is in your own hands. The power and authority is in your own hands. Let it go, whatever it is, and let the importance of your integrity work in you. Why? Because God wants those people who are innocent. اخلاقی معصومیت آپ کی زندگی میں قائم. یوسف کی زندگی میں وہ اخلاقیات کی معصومیت قائم اور دائم رہی اور خدا نے اس کو اقبال مندی ایون جیل خانے میں بھی دی, قید کی حالت میں بھی اس کو وہ برکتیں ملی جو آگے چل کے اس کو دروغہ اور حاکم اور کئی طرح کے ٹائٹلز دیے گئے, عہدے دیے گئے. سو خداوند کا شکر ہے. داؤد کہتا ہے اے خدا, داؤد جو بادشاہ داؤد ہے, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے, بادشاہ داؤد کی بات کر رہے ہیں. زبور اسی نے لکھے ہیں, کہتا ہے اے خدا اس صداقت اور راستے کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر.
अब अगर अदालत का वक्त आ गया है, आज अगर हम सब खुदा के हजूर में हैं, तो खुदा से आप अगर कहें कि मेरी अदालत कर, तो उसकी अदालत को बर्दाश्त करने का फिर हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, वो तैयारी होनी चाहिए, वो उसके सामने खड़े होने की पाकीज़गी होनी चाहिए. The sanctification and holiness and purity does not allow you to have any compromise in your life, any deception, any white lie or black lie or anything, because that brings sickness, that brings illness, that brings possession. अगर वो सफेद झूठ हमारी जिंदगी में हमारी प्योरिटी को पकड़े हुए हैं, उस पर कब्जा किया हुआ है, तो उस डीमन को, झूठ के, सफेद झूठ के जो डीमन है, उसको निकालना आपका काम है. आपको खुदा ने वो अथॉरिटी दी हुई है. So what do I need to tell you in the last is that in a minute we will be praying for you. We have to pray, and you are going to count all those things that which are making you to compromise with those situations, with those things that they should not be in your life. Amen. Hallelujah. खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें सिखाता है. अब why is your integrity is important? Because it defines that who you are. It defines what are you made of. It defines that which things you are determined. What kind of things that you need to carry on in your lives. What is lacking in you? Integrity is important in your life. All because it looks after you. खुदा ने पाक रूह के फलों को हमारी जिंदगी में इसलिए रखा है कि हमारी हिफाजत पाक रूह के फल करे. खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो, जिसने हमें इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि मैं हमारे अंदर पाक रूह के फल रह सके और वो काम कर सके. Let the Holy Spirit work in you. Let the devil be gone in the name of Jesus from your life. All those compromised things in relationship, the anger, all the physical things, the fleshly desires, they are all compromised with yourself, with your heart. क्योंकि कलाम में लिखा है कि दिल लाइलाज और हीलाबाज है, और दिल जब हीलाबाज है तो हम दिल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं दिल के साथ, अपनी ख्वाहिश के साथ, तो फिर मेरे बहन और भाइयों, जो इंटेग्रिटी है, हमारी दयानतदारी हमारे साथ कायम नहीं रहती. अपने आप के साथ दयानतदार रहना है, क्योंकि ये खुदा को पसंद है. अपने साथ दयानतदारी. 1 Chronicles chapter 29 verse 17 says, I know also, my God, that you tried my heart and you are pleased with my uprightness. क्योंकि खुदा जब टेस्ट करता है तो वो देखता है, क्योंकि उसने खुद ही हमारा दिल बनाया है, फिर भी उसने कहा है दिल लाइलाज और हीलाबाज है. खुदावंद के हुजूर में हम झुकेंगे अभी, और मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूं आज कि आपकी पोस्ट्स, आप एग्जेक्टिव्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं. This is a very, very important thing that we must follow the word of God. भाई रॉबिन्सन ने ये दुआ में, मुझे कुछ देर के लिए लगा था कि मेरा आधा सरमन बस अब भाई ने बोल देना है. इन्होंने फरमाया, जो
इब्रानियों का खत और उसकी कुछ आयत हैं। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है और उससे कोई मखलूक की कोई बात छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं. So but don't forget that he knows everything about us. We can hide from ourselves, try to hide. We can hide from our fellows in the house, in wherever you go. You can hide it from them, even from your life partner. But you cannot hide from the Holy Spirit and from God Almighty and from Jesus Christ. Jesus Christ cannot bring the salvation and redemption in your life if you are not ready to carry your own cross and deny yourself, because the word of God is he himself. Jesus is the word of God. That's why he is alive and he is very, very powerful. वो एक दो धारी तलवार है यीशु, जो आपके बंद और गूदे में से गुजर जाता है. तो बेईमानियां और कंप्रोमाइज और समझौते करना, उनका कोई हमारी जिंदगी में जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जानता है हमारे लिए. आज तौबा करेंगे तो हमारे अंदर जिंदगी के पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे और वो सारी बीमारियां जाती रहेंगी, जो बीमारियां हमारी जिंदगी में हमारी सोच की वजह से ही बन गई हैं, हमारी फिक्रों ने बना दी हैं, हमारी कंफ्यूजन ने बना दिया. आप आज ही अभी आजाद हो जाओगे, क्योंकि आपने वो सारी चीजों को जाने देना है जो आपकी नहीं है. These are not yours. Let all those things which are not of God, not of him, not yours, let them go. Because nothing belongs to you. You belong to God. And let God rule and reign with his integrity, with his faithfulness, and with his power and authority. Do not compromise with the fleshly desire, with your heart, and with the devil, because these all things lead us to compromise with devil. And I break that power in the name of Jesus, because that is not of God. And I plead the blood of Jesus Christ upon all of you, even you are believer or not. Once you have heard the name of Jesus Christ, you belong to the Lord Jesus Christ, because I'm commending your soul into his hands, and so he may watch over you day in, day out. And I'm commending this church into your precious hands, O God Almighty. And I pray that you take away everything and anything that is not of you. Release the integrity, the holiness and purity. Release in everybody's life, in their heart, mind, and soul. Nothing can separate them from the love of Christ if they are loyal to you, O God Almighty. If they are loyal to yourself, or to themselves, O Lord Almighty God. And I break all the power that blocks their way to reach to their own self in integrity, in the higher force that brings God Almighty all those things which are in heavenly places for these children and for these believers, oh God Almighty. I break that power that blocks all those blessings. I break that power that blocks their prosperity, integrity, and their honesty. I break that power that is not of God's, but that is of enemy.
Shazikarazi alarakantalaras shina bakalaras mababa kun hallelujah, 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 hallelujah. Giving glory, giving honor, giving praise unto your holy name, O God Almighty. I rebuke every thought of negativity, every unholy thoughts and passions and fleshly desires be gone in the name of Jesus. You are made whole for holiness. Children of God, you are made for power and authority. You are made for the fruit of the Holy Spirit. You are made for the gifts of the Holy Spirit. You are made for to receive the prophetic word and let that prophetic word live in you, rule your life. If there is no integrity, कोई दयानतदारी नहीं, कोई ईमानदारी आपके अंदर नहीं, वो जो प्रोफेटिक वर्ड है आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहां पे तो कोई भी ईमानदारी मौजूद ही नहीं। ईमानदारी से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे तो फिर वो काम करेगा, फिर खुदा जवाब भी देगा। खुदा आपकी नबूवत के अल्फाज जो आपको खुदा के खादमों से मिलते हैं, वो वादों को खुदा पूरा नहीं करेगा अगर आपके किरदार में दयानतदारी नहीं, आपके किरदार में ईमानदारी नहीं, आपके किरदार में परहेजगारी नहीं, आपके किरदार में नेकी नहीं, आपके किरदार में वो ऑनेस्टी नहीं जिसमें मासूमियत है, खुदा की मासूमियत, पाक रूह की मासूमियत, खुदा में यीशु मसीह की मासूमियत अगर आपकी जिंदगी में आज नहीं, तो वो जो प्रोफेटिक वर्ड्स खुदा ने जो प्रोमिसेस आपके साथ किए हैं वो पूरे नहीं होंगे। That is God's promise. क्योंकि वो चाहता है जिसने अपने बेटे ही को ना अलग किया, हमारे लिए वो मुआ, हमारे लिए उसने जान दी, सूली पे चढ़ के उसने अपना लहू बहाया कि हमें पाक साफ करे, हमें धोए, हमें ताकि हम उन वादों के लिए तैयार हों जो इब्राहिम के साथ वादे किए गए थे, हमारी जिंदगियों में पूरे हों, वो हमारी नस्लों में पूरी हों, वो हमारी पुश जनरेशन टू जनरेशन एक एक बच्चे की जिंदगी में पूरी हों। मेरे लिए खुदा में यीशु मसीह की वो निजात, वो जो रिडेम्पशन मिली है, मैं उसकी कदर करती हूँ, एक एक सांस में 100 बार उसका शुक्र अदा करती हूँ, और इसीलिए मैं दुआ आपके लिए भी करती हूँ कि आपके लबों से शुक्रगुजारी कभी ना जाए, शैतान को अपनी जिंदगी में कभी काम ना कर दे। I rebuke that in the name of Jesus. I rebuke your habitual sins in the name of Jesus. जो आप जानबूझ के करते हो, जो आप कोई बात नहीं आज कर लिया कल नहीं करूंगा, don't do that. Don't do that. Do not let your habitual sin rule and reign your mind, your wisdom, your future, your past and your present of yours and of your generations. Make the way. Make the way for your children. Oh God Almighty, I plead the blood of Jesus Christ upon every single person. Let the leaders be blessed today, oh God Almighty. Let their integrity be shown and shine in front of the man and God, oh Almighty. I give you all the glory for Kamran, for Brother Robinson, and for Pastor Harun, and for Shagufta, and for Rohan, and for Christine, and for all, for every single person who stands on the front line and takes all the blow from the enemy, but takes the integrity into practice. Oh, I give glory to you, God Almighty. I'm pleading the blood of Jesus Christ upon these your children who are standing in the front line, and God Almighty, bringing the good news to your children, to your bride, and to your church, oh God Almighty. I give thanks to you for their lives, and I pray that may every सारे काला जादू और जितनी भी शरारती कुव्वतें हैं, in the name of Jesus, I rebuke you and I curse you in the name of Jesus, that be gone from their lives, from their bodies, from their business, from their ministries, from their daily living life.
Ramashikara zia la rakantala razishina bakala raza mabama kun hallelujah, hallelujah. Let it go, my people. Let it go which is not of God. Let it go which is not belonging to you. That does not belong. Unnecessarily burdens do not belong to you. Let it be. Let it be God who may give you the blessings. Do not try to receive your own blessings. Do not try to snatch the blessings. Blessings will come when you are innocent in your integrity. Shamara sikara ziya la rakanta la razishina. Let the fruit of the Holy Spirit produce and multiply the fruit in you. Shamara sikara ziya la rakanta la razishina. काला जादू कब तभी हमारे नजदीक आता है जब हम दुनियावी बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. रबा जिक्र जिया ला रकंता ला राज़शीना. भाइयों और बहनों, जरूरत से ज्यादा खुदा से पूछे बगैर अगर आप कोई भी काम अपनी ताकत में करोगे, अपनी हिकमत में करोगे, शैतान उसका फायदा उठाएगा. Let not enter him into your honesty, because you are the chosen one, because you are the people who Jesus died for you on the cross, and he paid it all. He said, it is finished. Do not start it again, because it is finished. It's finished in your life, in your generations. It is finished. Do not let it in again, because it's done. It's dusted. Let the lies go. Let all the fleshly desires go from your life, from your heart, from your spiritual integrity, your psychological integrity, your physical integrity, your financial integrity must come from God Almighty. वो दयानतदारी, you are a steward of your life. This life does not belong to you, oh my children. Says the Lord, that come to me with your pure heart, and I will make you the giant of the land in my spirit and the truth. Let not fear come near you. Integrity and fear do not match with one another. Fear not, because God is with you. Fear not, because he's going to multiply your ministry. He's going to multiply your business, your finance. With your good intentions, he is going to multiply everything every word that comes out from your lips. God is going to make it fruitful, blessful, if it comes with the integrity of God Almighty himself. Shamara sikkara ziya la rakandala razishina. Jitne ustad yahan maujud hain, jitne doctors maujud hain, I'm commending you in the name of Jesus, in the good shepherd's hands and in the rabbi's hands, because you do not belong to yourself. That all what you are doing is him. He has given you to do it. It belongs to him. Let him deal with it, but you remain in your innocency, in your dyanatdari, imandari, neki or bhalai or parhezgari. और जब मुश्किल आए तो कभी भी खुदावंद से जुदा मत हो, क्योंकि खुदा ने वो सब दे दिया है जो उसने आपको देना था. Do not compromise. In the name of Jesus I pray. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you.